Hello children, this is your chapter number 3 economic reforms since 1991 or new economic policy for class 12. This is your part 1 by Ms. Divya Saraswat. Let us see what are learning objectives for this chapter. After studying this chapter, you will understand the background of reform policies which we have learned in your chapter 1 and 2. Understand the mechanism through which reform policies were introduced, comprehend the process of globalization and its implication for India, be aware of the impact of the reform process in various sectors. Topics to be covered through this video are meaning of economic reforms, need for economic reforms in India, introduction of three features of new economic policy, three main features. Now, what is economic reform? First, we should understand this. Economic reform एक dynamic combination होता है of policy and programs for speedy growth, efficiency in production. Efficiency means utilization of resources or improving the market powers. Efficiency in production and making a competitive market, जो कि हमारा नहीं था. Okay, there was a monopoly of public sector over private sector. Let us overview the situation in 1991 economic crisis before going to the further points of that. By 1985, India faces balance of payment deficit problem. Okay, due to more expenditure over revenue और हमारी जो income generation थी वो बहुत ज़्यादा कम थी. So there was a huge disparity between income and expenditure. Secondly, by the end of 1990, it was in a serious economic crisis now. The government was close to default and its central bank had refused new credit. RBI ने refuse कर दिया था for new credit by printing the new currency notes. In 1991, India met with an economic crisis related to external debt, जो हमने बाहर से लोन लिए थे. ठीक है, फॉरेन लोन्स जो थे हमारे उसमें बहुत ज़्यादा वी आर अनेबल टू पे देयर इंटरेस्ट, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट कैसे पे कर पाएंगे. द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू मेक द रीपेमेंट ऑफ ऑन इट्स बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड. द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विच वी मेंटेन टू इम्पोर्ट पेट्रोलियम एंड अदर इम्पोर्टेंट आइटम्स ड्रॉप टू लेवल दैट वी आर नॉट एबल टू पे वी आर नॉट हैविंग सफिशिएंट अमाउंट इवन एट फोर्टनाइट. हमारे पास 2 वीक्स के लिए भी सफिशिएंट अमाउंट नहीं था कि हम इंपोर्ट कर सकें पेट्रोल का या फिर अदर आइटम्स का. द क्राइसिस वाज फर्दर कंपाउंडेड बाय राइजिंग prices of essential goods. Government made increase in the prices of essential goods in country so that they can generate taxes, they can generate revenues, जिसके थ्रू वो रीपेमेंट कर सकते अपने लोन की. बट इट वाज नॉट पॉसिबल कि इतना सारा हम अमाउंट रीपेमेंट कर पाए. नाउ व्हेन द एक्सपेंडिचर इंक्रीज दैट मच और हम लोग अनेबल टू पे थे कि हम अपने क्राइसिस को मैच कर सकें, फुलफिल कर सकें किसी इनकम के थ्रू, देन इंडिया अप्रोच टू IMF एंड वर्ल्ड बैंक. दे वेंट टू देयर फॉर हेल्प. इंडिया को उन्होंने $7 बिलियन एज अ लोन दिए, बट उसके बदले में दे हैव टू फुलफिल 2 सिचुएशंस. फर्स्ट वाज इंडिया को अपने रिजर्व बैंक के गोल्ड के थ्रू वो लोन को पास कराना पड़ा. 20 टोन्स ऑफ गोल्ड टू यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड एंड 47 टोन्स ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड. ये हमें एज अ डील उनको पे करना पड़ा. एंड सेकेंड उनका कंडीशन ये था, यू हैव टू ओपन अप द डोर फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर और आपको लिबरल करना पड़ेगा अपनी कंट्री की इकोनॉमी को. बिकॉज एज वी नो हम लोगों ने इम्पोर्ट पे टैरिफ एंड कोटा लगा रखा था. ड्यू टू दिस foreign investors are unable to invest in Indian economy. In addition, as a part of bailout, IMF expected India to liberalize and open up the economy and remove trade restrictions, which was tariff and quota between the India and other countries. So these were the situations. Now we are going to understand
according to point, what was the actual situation and what is the need uh, to for implement new economic reform or new economic policy. PV Narasimha Rao was our prime minister at that time, and Dr. Manmohan Singh as our finance minister. They made new economic policy with their team to accelerate the rate of growth of our economy. So they made a new or a big change in Indian economy at that time. Now, why do we need new economic reform policy? So for this, we are going to start by point. Okay. So first is your fall in foreign exchange reserves. Foreign exchange reserve fell to low level that the same were not enough to pay for import even for 10 days. हम 10 days तक भी import और fortnight तक भी import पे नहीं कर पा रहे थे. हमारे पास इतना foreign exchange था ही नहीं. अगर हम इसके डेटास की बात करें, in 1986 to 1987 we are having 8,151 crore in foreign exchange, which is declined sharply to 6,252 crores in 1989 to 1990. Government failed to adopt in this situation. अब हमें लग रहा है government failed to adopt the policy of liberalization as proposed by international financial institution. अभी हमने discuss किया, उन्होंने there was a condition to liberalize your economy so that other countries can come to your country and invest. Okay, through which you can increase your foreign exchange reserve. One is failure of public sector. This one is the major aspect, as we had discussed this in our last chapter, that there was a monopoly of public sector. We just have given few industries to the private sector as a ownership, और रेस्ट ऑफ द जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उसमें ओनरशिप जो थी सोल ओनरशिप जो थी वो पब्लिक सेक्टर्स की हुआ करती थी. ठीक है. एंड पब्लिक सेक्टर इज बेसिकली वर्क ऑन सोशल वेलफेयर. उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कुछ नहीं होता था. ठीक है. दे आर वर्किंग फॉर सोशल कॉज. अगर वो लॉस में भी रन कर रही है देन ऑल्सो दे विल नॉट गोइंग टू शट अप देयर शटर्स. ड्यू टू दिस पब्लिक सेक्टर्स बहुत लॉस में जा चुके थे. Okay, so in 1951 there was just 5 enterprises in public sector. 2001 में 232 हो गए. But because of their poor performance उन्होंने बहुत सारे लॉस सफ़र करे. Public sector's undertaking degenerate into a liability. पब्लिक सेक्टर जो थे वो लाइबिलिटी के अंदर अब रन कर रहे थे. इंडिया अप्रोच टू IBRD and World Bank, which is popularly known as World Bank, and IMF to receive $7 billion as a loan to manage the crisis. और उसके पीछे दो conditions थी. First was we have to pay a heavy gold for that, and secondly is you have to adopt new economic policy to liberalize your Indian economy. With the help of a picture you can understand this. This is IMF and your finance minister and PM. They got 7 billion from IMF as a loan. Now, third one is high fiscal deficit. Fiscal deficit हमारा कब होता है? When our expenditure is more than our revenue. हमारा खर्चा ज़्यादा होता है हमारी इनकम के कंपैरेटिव. ओके, एंड दैट टाइम वी फेस फिस्कल डेफिसिट. सेम यही सिचुएशन थी हमारे इंडिया के अंदर. हमारे एक्सपेंसेस बहुत थे बट द रेवेन्यू जनरेशन इज़ वेरी लो. अगर हम कुछ बात करें हमारा जो सोशल सेक्टर है एंड डिफेंस सेक्टर है वहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट तो होती थी बट वी आर नॉट गेटिंग एनी रेवेन्यू फ्रॉम देयर, राइट. एंड इफ़ वी आर सेटलिंग अप द इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज़ को सेटल करने में बहुत सारा एक्सपेंडिचर लगता है बट उसमें से हमें उतना रेवेन्यू जनरेट हो नहीं पाया जस्ट बिकॉज वो डोमेस्टिकली था. हमने उसका इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर नहीं पाया just because हम लोगों ने ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे. We were not ready for the foreign competition. We are making up us ready for that. Due to this हम लोग ने लोन्स जब अप्रूव कराने के लिए शुरू करा बट द वर्ल्ड बैंक हैज़ डिनाइड टू गिव अस द लोन जस्ट बिकॉज हम लोगों ने जो ऑलरेडी बहुत सारे लोन ले रखे थे वी आर अनेबल टू पे देयर इंटरेस्ट
हम इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पा रहे थे, तो हाउ कैन वी पे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ दैट. ओके, सो वर्ल्ड बैंक का फेट उस टाइम पे हमारे ऊपर से शेक हो गया था. Another aspect is deficit in balance of payment. Deficit in balance of payment is a situation in which import is greater than export. And if we are talking about that time, the import is increasing rapidly comparative to export. Export was very slow comparative to it, and due to which there was deficit in balance of payment, and we don't have foreign exchange reserves for paying the import as well. Another one is increase in rate of inflation. The rate of inflation was increased from 6.7% to 16.7%, and the main reason for inflation was annual rate of increase in prices was rapid increase in supply of money. जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस थे गवर्नमेंट ने वो सारे इंक्रीज कर दिए थे टू जनरेट टैक्सेस एंड रेवेन्यू फ्रॉम द पब्लिक फॉर पेइंग देयर डेट्स. And because of increasing pressure of inflation, country's economic position deteriorated further. Now, it's time to make new measures of economic policies. 1991 इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के हम लोगों ने 2 मेजर्स रखे थे. फर्स्ट इज स्टेबलाइजेशन मेजर. पहले हमें अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है. व्हेन द इकोनॉमी स्टेबलाइजेस तब हम उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे. Okay, stabilization was a short-term measure which aimed at solving the immediate cause. What was the immediate cause in 1991 economic crisis? The immediate cause was deficit in balance of payment and inflation. And third one is foreign exchange reserve. ये हमारे immediate cause थे जिन्हें हमें तभी के तभी ठीक करने की ज़रूरत थी. Otherwise we are unable to run our economy. So these including correcting the weakness in the balance of payment crisis, steps to bring the inflation under control, and also the maintain of sufficient foreign exchange reserve. Now, structural measures of this are long-term measures which aim at improving the efficiency of economy. Efficiency means proper utilization of resources and cost minimizing. Increasing its international competitiveness by removing the rigidities in various segments of the Indian economy, which is mainly in import and foreign investment. जो हमारे इंडिया में हम लोगों ने बैरियर्स लगा रखे थे that the foreign companies will not invest in our Indian companies. Now, these reforms contain 3 parts. अगर हम structural reforms की बात करें, privatization, liberalization and globalization. In liberalization we are having industrial sector reform, financial sector reform, fiscal reform, foreign exchange reforms and trade and investment policy. Whereas stabilization do not have any part of it. In our next video we will learn about liberalization. Okay, we will read about all 3 of them, but start from liberalization. So thank you for watching this video. Hope you learn from it.